जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, दिस इज बासुदेव पंडा. वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश. पहले बायोलॉजी रो जूलॉजी तार एमसीक्यू सेट 5 आम देखा. या पूर्व आम देखी सारी ऑलरेडी चारोटी सेट. तो ये हूँ 5 नंबर सेट. बोटनी रो 4टी, जूलॉजी रो 4टी सेट ऑलरेडी सरी. एज पर द कमिटमेंट 10-10 सेट तुमको करके देवी मुझे. ओके, तो विलंब करवा ना. जो मैंने जॉइन कले फटाफट सांग मान सहित सेयार करदे जहाँफल से भी जॉइन करेंगे. मुझे सब कहे सांग मान सहित माने एमसीक्यू रो गेम खेलवा. इट्स अ फनी मैटर. सो सीधा जीवा देखा कौन कौन रही आज माने बोर्ड एग्जाम 2024 जूलॉजी रो सिलेक्शन एमसीक्यू सेट 5 रो प्रश्न गुड़िक. हाँ, ताहले पिले प्रथम प्रश्न कौन अच्छी. प्रथम प्रश्नटी अच्छी तुम मान द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज. द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज. ओव्यूल रो सबुठारु बड़ सेल. द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज. ऑप्शन ए एंटीपोडल सेल, बी मेगास्पोर मदर सेल, सी सेंट्रल सेल, आउ डी होची नॉन ऑफ द अबव. ताहले कोटा ठीक उत्तर पिले कौन. The largest cell of the ovule is option A antipodal cell, B megaspore mother cell, C central cell, D none of the above. ठीक उत्तर होची it is central cell. Which one? Central cell is the largest cell of the ovule. So option C होची बोले ठीक उत्तर है. जीवा परवर्ती प्रश्न. परवर्ती प्रश्न कौन रही बोले integument of ovule gets transformed into. प्रश्न डेला integument of ovule gets transformed into. Option A seed, B seed coat, C fruit wall, D cotyledon. ये होची प्रश्न पहले. ताले ठीक उत्तर कौन. ठीक उत्तर होची the integument of ovule gets transformed into, yeah, it is seed coat. Option B seed coat होची पहले ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न पाखु जीवा. परवर्ती प्रश्न होची in nature clastogamous flowers are. In nature clastogamous flowers are. Option A shell pollinated, B insect pollinated, C wind pollinated, D bird pollinated. कोटा ठीक उत्तर पिला. प्रश्नटी थिला in nature clastogamous flowers are. Option A shell pollinated, B insect pollinated, C wind pollinated, D bird pollinated. ठीक उत्तर होची it is self pollinated. कोड़ा option A. So in nature clastogamous flowers are self pollinated. Option A होची ठीक उत्तर. जीवा परवर्ती प्रश्न. परवर्ती प्रश्न होची in F2 generation कौन. In F2 generation of a monohybrid cross, in what ratio the recessive character appears. Option A 1/2, B 1/4, C 3/4, D 1. प्रश्नटा थिला in F2 generation of a monohybrid cross, in what ratio the recessive character appears. The right answer would be it is 1/4. Option B 1/4. क्वेश्चन नंबर 5. 5 नंबर प्रश्न है in a Mendelian hybrid experiment. In a Mendelian hybrid experiment, F1 plants are कौन. F1 plants are. Option C option A heterozygous, B homozygous, C hemizygous, D dizygous. कोटा ठीक उत्तर पिले. प्रश्नटी थिला in a Mendelian hybrid experiment, F1 plants are. Option A heterozygous, B होची तमरो कौन पिले. B होची homozygous, C hemizygous, D dizygous. ठीक उत्तर होची it is heterozygous. Option A right answer. Next question. Question number 6. The character which predominates and clearly seen in F1 generation. प्रश्न थिला the character which predominates and clearly seen in F1 generation is. Option A
intermediate, B incomplete, C recessive, D dominant. प्रश्नटी थिला द कैरेक्टर व्हिच प्रिडोमिनेट्स द एंड क्लियरली सीन इन अपॉन जनरेशन इज ऑप्शन ए व्हाट इंटरमीडिएट, बी इनकम्प्लीट, सी रिसेसिव, डी डोमिनेंट. पूरा ठीक उत्तर. ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी डोमिनेंट. ऑप्शन डी डोमिनेंट द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब ले. नेक्स्ट क्वेश्चन होची जे ए पॉलीपेप्टाइड इज असेंबल्ड ऑन. A polypeptide is assembled on option A ribosome, B DNA, C RNA, D nucleus. प्रश्नटी थिला a polypeptide is assembled on option A ribosome, B DNA, C RNA, D nucleus. So the right answer is a polypeptide is assembled on ribosome. Option A होची बिले correct answer. परवर्ती प्रश्न देखा. परवर्ती प्रश्न होची द कोडन व्हिच हैज डुअल फंक्शन इज. द कोडन व्हिच हैज डुअल फंक्शन इज ऑप्शन ए यूजीए, ऑप्शन बी ट्रिपल यू, ऑप्शन सी एयूजी, ऑप्शन डी जीयूए. कोटा ठीक उत्तर बिले. ठीक उत्तर होची इट इज एयूजी. कोटा ऑप्शन सी एयूजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. 9 नंबर प्रश्न होची रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमर्स 3. रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम nucleoplasm will affect the synthesis of dash. Option A tRNA, option B hnRNA, option C mRNA, option D rRNA. प्रश्नटी थिला removal of RNA polymerase third from nucleoplasm will affect the synthesis of. It is option A tRNA the correct answer. परवर्ती प्रश्न. परवर्ती प्रश्न होची mycorrhiza is a. Mycorrhiza is a option A symbiotic association fungi with algae. Option B symbiotic association of fungi with gymnosperm. Option C symbiotic association of fungi with angiosperm. And option D symbiotic association of fungi with the roots of certain seed bearing plants. कोटा ठीक उत्तर पिला. ठीक उत्तर होचे it is symbiotic association of fungi with the roots of certain seed bearing plants. Option D. परवर्ती प्रश्न देखिबा. परवर्ती प्रश्न होची the vitamin which content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is. प्रश्न थिला the vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is. Option A vitamin C, option B vitamin D, option C होची vitamin B12, option D होची vitamin E. गुड इवनिंग डेविल क्वीन. तो प्रश्न उत्तर कौन हम. इट इज विटामिन B12 ऑप्शन सी. विटामिन B12 ऑप्शन सी होजी ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न देखिबा. परवर्ती प्रश्न हला द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ. द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ. ऑप्शन ए डिसॉल्व impurities, option B stable particles, C toxic substances, option D harmful bacteria. प्रश्न कौन थिला. द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. प्राइमरी माने प्राथमिक. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ. इट इज ऑप्शन बी स्टेबल पार्टिकल. स्टेबल पार्टिकल रिमूवल होची प्रथम प्रक्रिया प्राइमरी ट्रीटमेंट. तापर परवर्ती प्रश्न अछि बिले 13 नंबर प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 13. 13 नंबर प्रश्न कोन बिले न्यूमोटोफोर्स. न्यूमोटोफोर्स आर प्रेजेंट common in. Pneumatophore are present common in. Option A xerophytes, B hygrophytes, C mesophytes, D halophytes. प्रश्नटी थिला न्यूमेटाफोर्स आर प्रेजेंट और कॉमन इन. ऑप्शन ए xerophytes, B hygrophytes, C mesophytes, D halophytes.
ठीक उत्तर होची इट इज हेलोफाइट्स ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Geometric representation of age. Geometric representation of age structure is a characteristic of. Geometric representation of age structure is a characteristic of. Option A, population. B, landscape. C, ecosystem. D, biotic community. Which is correct? Geometric representation of age structure is a characteristic of. Option A, population. B, landscape. C, ecosystem. D, biotic community. So the correct answer will be it is option A, population. कोटा पहले population होची ठीक उत्तर. Question number 15. 15 number प्रश्न कोना? Fungal association of roots of higher plants. Fungal association of roots of higher plants in mycorrhiza is known as. Option A, parasitism. Option B, hyperparasitism. Option C, mutualism. Option D, commensalism. कोटा ठीक उत्तर. प्रश्नटी थिला फंगल एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन माइक्रोरिजा इज नोन एज. ऑप्शन ए, पैरासिटिज्म. ऑप्शन बी, हाइपरपैरासिटिज्म. सी, म्यूचुअलिज्म. एंड डी कौन पिले? कमेंसलिज्म. द राइट आंसर इज इट इज कॉल्ड यस म्यूचुअलिज्म. कोटा पिले? म्यूचुअलिज्म. ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर. परवर्ती प्रश्न देखिबा पिले क्वेश्चन नंबर 16. 16 नंबर प्रश्न होची which of the following is the biodiversity hotspot in India? Which of the following is the biodiversity hotspots in India? Option A, कौन पिले? पंचमराही. ऑप्शन बी, सुंदरबंस. ऑप्शन सी, वेस्टर्न घाट्स. ऑप्शन डी, गल्फ ऑफ मनेर. प्रश्नटी थिला जो which of the following is the biodiversity hotspots in India? ऑप्शन ए, पंचमराही. ऑप्शन बी, सुंदरबंस. Option C, Western Ghats. Option D, Gulf of Manair. So the hotspot of biodiversity in India is it is Western Ghats. Western Ghat. Option C, Western Ghat होची ठीक उत्तर. शेष प्रश्न आज शेष प्रश्न 17 नंबर प्रश्न सेटा होची dodo became extinct due to. Dodo became extinct due to. Option A, global environmental change. Option B, over exploitation of resource. Option C, invasion of non-native species. D, pollution. प्रश्न कौन थिला? Dodo became extinct due to. Option A, global environmental change. Option B, over exploitation of resource. Option C, invasion of non-native species. D, pollution. Which is correct? Option D, pollution. Pollution होची भूल उत्तर मिस्टर किरण. ठीक उत्तर होची इट इज ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्स. कोटा डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू व्हाट? ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्स. ऑप्शन सी प्रभुदत्त. यस, ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर. तो ये थिला आज बायोलॉजी सेशन पिले. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. एमआईएल सेशन रे देखा. सी यू देयर. स्टे ट्यून्ड मास्टर इंग्लिश. जय जगन्नाथ.